My dear friends, nature is the universe we live in. We interact with it every single second. The water we drink, the sunlight that makes this earth shines and help life thrives. The trees, shrubs, birds, animals, sand, mountains, everything is nature. We exist because of nature and we are nature. Dear friends, this video is not just about journey to the Nature Nest Biodiversity Park. This is where I will discuss what are the threats that nature is facing, why it is so important to save it, why we need to conserve what remains of it, and how this small biodiversity park is helping in the conservation. Excess of anything is bad. It shows aggressive and invasive parameters, which is against the law of healthy ecosystem. Human population has just doubled in past 50 years, which has given rise to multiple activities which act as a threat to nature. Rapid urbanization, industrialization, excessive mining of sand, soil, and stones are some of the major concerns that are eradicating natural landscapes, jungles, and the natural heritage. Another major issue is the lack of awareness among the youth. Individuals residing both in urban and rural areas lack this awareness. No doubt that technology has helped the mankind to optimize many difficult tasks and has eased the life for us. But looking from the different angle, it has actually created a significant gap between human and nature. In India, children would know the name of manufacturing companies of smartphones. But if we go and ask them the name of 10 native trees, it is highly unlikely that they will be able to tell. Such a gap at the individual level is what the issue is, and this is an awareness issue. To name a few, global warming, habitat loss, species extinction are some of the major concerns. In order to conserve what remain and mitigate the risk of climate change that is happening, what we need is active participation, educating as many as possible, spreading awareness of the environment we live in, what are the native plants, trees, shrubs, birds, butterflies, animals. What do we need to plant? Because, my friends, right plantation is very crucial and random plantation is not the solution. We need to restore what has been taken. We need to stand up, contribute to the good cause, and save our mother nature that has given us everything from shelter to food to water. The Nature Nest Biodiversity Park has been made exactly for this purpose. The conservationist of the park has planted native species of trees, grasses, and shrubs. These species are now has become rare, and the park is made to help the future generations study nature, to learn the relationship of organisms and their dependency. In order to conserve species which are now getting extinct, the efforts have been made. We heartily welcome you all to visit this park and gain the knowledge of nature and share what you learned. We have also provided number in the description so anyone can contact us and visit the park.
Dr. Mukul Pandya and Mr. Ankush Dave will now speak about the Nature Nest Biodiversity Park. Okay, we are at a piece of land which was purchased by Colonel Ankush Dave about 50 years back, and this land initially had a brick kiln, a bhatta. Uh, the topsoil was very little, it was almost absent. Uh, there were few trees here, and we started massive plantation of local trees, local species here. And some 6 years back, we got associated with a gentleman called Mr. Ankush Dave, who is an ecological restorer, and he did a wonderful job of bringing all different kinds of native grasses, native shrubs, native trees from all different nurseries in India. He traveled at far-flung places like Jabalpur, Nasik, Jodhpur, and brought different species of native shrubs which once existed here and which were on the verge of extinction. So what we see here is a part which is now called Nature's Nest Biodiversity Park. By planting these native grasses, shrubs and trees, the fauna like butterflies and insects and damselflies, which were not seen in this area for many decades, they have started coming back. So all those who are interested in biodiversity, looking at butterflies, birds, damselflies, and other insects, they should all come to visit this beautiful patch of greenery. I would like to introduce this gentleman, a simple person, a man who is a true environmentalist in today's time, who bikes about 40 kilometers a day. He doesn't use a petrol or diesel vehicle because he doesn't want to leave his carbon footprints. He is the person who is responsible for creating this beautiful green patch of land into Nature's Nest Biodiversity Park. His name is Ankush Dave. अभी हम जिस जगह खड़े हैं आप ये एक ईंट का भट्टा था पहले, और यहाँ पे जो यहाँ पे ईंट का भट्टा होने की वजह से यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है ऊपर की 2-2.5 फुट की, तो वो नहीं है। उसके बाद ये एक डंपिंग ग्राउंड था, कचरे का डंपिंग ग्राउंड था। तो ये एक डिग्रेडेड लैंड था, काफ़ी डिग्रेडेड लैंड था। तो जब शुरू में हम लोग यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगाते थे उसमें काफ़ी नुकसान भी होता था, पर धीरे धीरे करके हमें समझ आया काफ़ी सारी चीज़ें। तो जब मेरे को याद है कि जब हमने 2016 में ये काम शुरू किया था, तो सबसे पहला पेड़ उधर उस साइड में एक प्रोसोपिस सेंड्रेरिया का, शौकरे का एक पेड़ लगाया था जिसे शमी कहते हैं। तो हमको जो गड्ढा खोदने में वहाँ पे काफ़ी समय लगा था, करीबन एक गड्ढा खोदने में 4 से 5 घंटे लगे थे एक पेड़ के लिए। और आज की तारीख में वो जगह इतनी मतलब बढ़िया हो गई है, उपजाऊ हो गई है, और मिट्टी इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, लीफ लिटर गिर के वहाँ पे ग्रासेस, काफ़ी ग्रासेस आ चुकी हैं, काफ़ी मतलब वाइल्ड प्लांट्स अपने आप उग रहे हैं, और काफ़ी जो पौधे हमने लगाए थे उसका नेचुरल रीजनरेशन भी शुरू हो गया। तो वहाँ पे अब वहाँ पे जो गड्ढा खोदने में और जब ज़मीन उपजाऊ हो गई है, तो अब वहाँ पे जो गड्ढा खोदने में, एक गड्ढा खोदने में 15 से 20 मिनट का ही समय लगता है एक पौधे के लिए।
तो यहाँ पे ये जो दीवार के साथ आप देखेंगे कई सारे हमारे देसी पेड़ लगे हैं, जो कईयों में फूल आने शुरू हो गए हैं, कईयों में फल भी आने शुरू हुए हैं, कईयों में अभी आने बाकी हैं। और कुछ पेड़ जो है अभी भी हमारा काम चल रहा है, कुछ काफ़ी सारे करीबन 10 से 15 प्रजाति के पेड़ हमने अभी भी लगाए हैं करीबन 3-4 महीने पहले। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके यहाँ पे काफ़ी सारी बटरफ्लाइज भी दिखी। आप देखेंगे यहाँ इस 6 एकड़ के लैंड में जो मैंने बटरफ्लाइज डॉक्यूमेंट करी हैं वो 48 स्पीशीज़ करी हैं, और जबकि पूरे आगरा में 63 स्पीशीज़ हैं। तो 6 एकड़ के पैच में 48 स्पीशीज़ तितलियों का होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो बड़े वाइल्ड एरियाज़ हैं, कीथम हैं या नेचर वॉक है, वहाँ पे भी इसके मुकाबले काफ़ी कम बटरफ्लाई। तो इस तरह के छोटे छोटे वाइल्ड पैचेज और जो लोग भी अपने घर में या जिनके पास लैंड है दीवार के चारों तरफ, वो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा उद्देश्य मेरा और था यहाँ पे जो मैंने सोचा था, बल्कि अभी भी मैं सोच रहा हूँ और इसको करना चाहता हूँ, वो ये कि जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज के या जो भी बच्चे हैं जो पर्यावरण के बारे में या हमारे देसी पेड़ों के बारे में सीखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आके सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनसे इंसेक्ट्स की क्या रिलेशन है वो सब एक इस कंजर्व एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले बच्चों के साथ दिसंबर जनवरी में कई वॉक्स की थी, जिसमें बच्चे अब हमारे जो देसी प्रजाति में 10 पेड़ों के नाम भी नहीं बता पाए थे। तो ये एक बड़े अफसोस की बात है, हम लोग धीरे धीरे अपनी जो प्राकृतिक विरासत है वो उसको खोते जा रहे हैं। तो इसीलिए इस प्राकृतिक विरासत को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से इस पार्क को जो भी हमारे यहाँ देसी जो प्लांट्स है, ट्रीज हैं, उसका मैंने प्लांटेशन शुरू किया था। बस यही जो है मेन उद्देश्य।